On that day I had to use Zoom recording, but today OBS recording is better than Zoom recording. क्वेश्चन वो ये था, एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ सीरीज RLC AC सर्किट. तो हम यहीं पे कहीं थे. दिस इज AC सोर्स connected to series combination of resistor, inductor and capacitor. Voltage across these are VR, VL and VC, and according to our previous knowledge it is IR for voltage developed across inductor. What is L di by dt? EMF. So that is voltage developed across inductor. And what is Q by C? Q by C means voltage. Voltage EMF. across capacitor. And if I add all this voltage, I should get the voltage supplied V. Okay, so this term, second term was written as first term is interchanged. Okay, then I is nothing but differentiation of charge with respect to time. That was been done here. Same way I is replaced with dq by dt, and the rest of the story is same. So double differentiation is written like this. The rest of the story is same. This is equation 1. What we wanted is solution of this equation. We want to find value of current. Finally we want to find current I. Okay, but right now we are finding solution of this equation. Then what we'll get is we'll get value of Q. Finding solution means finding value of charge Q. Now we don't know what the solution could be, so we start with the assumption that imagine that Q must be periodic in nature. So our expected solution is this. That solution is going to be Qm sin omega t plus theta. इसलिए लॉजिक में एक्सप्लेन किया था, क्या था कि हमने ऐसा ही सॉल्यूशन क्यों इमेजिन किया. साइन वेव है इसलिए. अपना जो वोल्टेज सप्लाई किया है वो साइनोसॉइडल है. Voltage is periodically changing, then charge is also periodically changing. So V equal to Vm था, तो यहाँ पर Q equal to Qm. थीटा ऐड किया because it may lead or may lag, we don't know. अभी equation 1 को we'll substitute in this formula and see what happens. So here third term you can substitute this Qm sin omega t plus theta. In second term you need to differentiate. So this differentiation of Q dq by dt will give you this equation 3. And in first term you need to take twice derivative of Q. So that is done here. And that is equation number 4. ये 2, 3, 4 will substitute in 1 and we get this equation. L negative omega square Qm. This is twice differentiation answer plus R, one time differentiation 1 by C, and this is the till this point we have done, and few more steps are also done. Pages are come out. Okay. चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मज़ा नहीं है इसमें. Okay, something was taken out as common. What was taken out as common? ओमेगा. Qm Qm. and omega were common. Then what is left inside? Negative omega L sin omega t plus theta. Is it okay? Yes sir. Plus omega Qm was already outside, so this is R cos
omega t plus theta, and in third term you don't have omega only. Qm will go outside, but omega is not there, so 1 by omega c sine omega t plus theta, and that should give you Vm sine omega t. Okay, sir? Yes, sir. Then Qm omega. What is omega L? Omega L. Impedance. Impedance Actually. of what? Of What is omega L? inductor. This one, no, let me stop this WhatsApp. Okay. Impedance of It is what is omega L? impedance of Inductor. inductor. Sine omega t plus theta, no change. R cos omega t plus theta, no change. What is 1 by omega c? Impedance of Capacity. capacity. Sine omega t plus theta is equal to Vm sine omega t. Okay, so I can write Qm omega. Shall I write XL minus XC? XC minus, I'll write this term first. Yes, sir. Sine QM omega t. omega. This first term R cos omega t plus theta, this is written here. सर उस Plus, कॉस भी साइन में कन्वर्ट नहीं कर देते तो साइन कॉमन आ जाए. नहीं अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अभी. XL minus XC sin omega t plus theta equal to Vm sin omega t. Therefore Qm omega, this I can write R by Z, Z for impedance, cos omega t plus theta plus XL minus XC upon Z sin omega t plus theta equal to Vm by L sin omega t. Fine, sir? Yes, sir. Whole equation divided by Z. Now अगर if you still remember, सर Vm by Z नहीं होगा? Vm by Z, sorry, Z. So this was R, this was, let's say, XL, this was XC, so effective was XC, XL minus XC और vice versa. ये आ गया था वो Z, this angle was phi, right? Yes, sir. So you had this kind of diagram. This is XL minus XC or XC minus XL. This is R, this is Z, and this is phi. So what is R by Z here? Shall I write cos phi? Cos phi. Phi. And XL, or see it is XC minus XL. So XC minus XL upon Z equal to sin phi. तो ये पहले वाले इक्वेशन में लिख दे Qm ओमेगा cos phi sin omega t plus theta plus sin phi sin omega t plus theta equal to Vm by Z. यहाँ तक किया था, am I right? सर वहाँ पे cos आएगा. Cos नहीं. Cos phi के बाद. यहाँ ये cos Cos phi. ये cos है और sin है, right? तो
double time cos, double times sin. Now I'll keep it hidden. ये लिखा हुआ, ठीक है. अभी already I have written, so we can go little faster. Till this point all is well. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I rearrange the term. इसको आगे ले लिया. Then I can write cos A minus B. So this is A. Omega This is, theta. Will be fine. so this is cos A minus B. This trigonometric identity. Okay. Yes, sir. अभी थोड़ा ध्यान देना. Comparison. We are going to make two comparison. This first comparison. Okay. This is periodic function. This is also periodic function. So it means Qm by omega must be equal to Vm by Z. Now what is Vm? Voltage Voltage peak voltage. divided by current. Sorry, impedance. Then what do you get? Current, Ohm's law, voltage by impedance is current. So instead of Qm omega, I can write Im. Qm omega equal to Im. Okay. अब ना एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या था पता है? Im cos sin. I was imaging, I was taken as Im sin omega t plus theta. हमने ये जब assumption लिया था, what was value of Im we are not knowing, but now we know what is Im. Qm omega. तो इसका वैल्यू पता चल गया. तो एक थीटा का स्टोरी बाकी रहा. ठीक है. Earlier we had I equal to QM, ऑलरेडी लिखा हुआ है. QM ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा ऑलरेडी था ही. तो इंस्टेड ऑफ QM ओमेगा नाउ यू कैन राइट I equal to IM. Right? Okay. Now second comparison. In this formula, you have got omega t plus theta minus phi, और right side में है sin omega t. Right? If I compare their argument, left side trigonometric identity equal to right side. I converted sin into cos like this. Is it legal? Yes, sir. It means now both sides are cos. You can compare the arguments. Omega t plus theta minus phi equal to minus pi by 2 plus omega t. So omega t will get cancelled. What is left is theta minus phi Yes, fine. equal to minus pi by 2. So what is theta? Phi minus pi by 2. तो ये जो थीटा हमको नहीं पता था, ये भी पता चल गया. Okay. सर Yes. वो लास्ट वाला फिर से दिखाओ ना पूरा. समझाओ नहीं, खाली दिखाओ. ऊपर ऊपर. फर्स्ट वाला कंपैरिजन, फर्स्ट कंपैरिजन. हाँ सर. ये जो कंपैरिजन किया था, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है, लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड इज QM ओमेगा, और राइट साइड का मैग्नीट्यूड है VM बाई Z. तो QM omega equal to VM by Z. Now this tells that it is a ratio of voltage to impedance, so that gives you current. So actually QM omega is maximum value of current. और हमने जब डेरिवेशन किया था, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में जब डेरिवेशन था, तो I था I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस थीटा था.
दूसरा जब सॉरी Q इक्वल टू QM था, फिर इसका जब डेरिवेशन किया था dq by dt equal to I, we got this value qm omega cos omega t plus phi. So now we can say that qm omega is nothing but Im. So first comparison से maximum value of current मिला, and from second comparison theta मिलेगा, और इसका स्टोरी ये है. Understood? Yes or no? Yes, sir. Jayagiri? Yes, sir. Mobile is not charging. Charging. Okay, and let's move further. Sir, recording. Recording is going on. Started or not? No, it started. It is going on. Okay. So ये जो था अपने लिए आई एम बहुत शुरू में था QM ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा था, तो QM ओमेगा की जगह लिख दिया IM. अभी थीटा का स्टोरी मिल गया. थीटा क्या वैल्यू क्या मिला? 5 माइनस 5/2. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. ओके, ऐसा लिख सकते हैं. हाँ सर, लिख सकते हैं. ओके, because of pi/2 it becomes sin omega t plus theta plus 5, sorry. Yes, sir. Okay, in this formula how will you get value of current? By Vm by Z. And how will you get value of phi? Tan inverse XL minus XC by R. Right? Yes, sir. अच्छा, मेरे को ये सब दिखाना हो in a diagram, how would I show? Think about the possible diagram. This is going to be R. Let's say XL is more dominant. This is XL, inductive impedance. This is capacitive impedance. Effective impedance is this, which is XL minus XC. And if I complete the parallelogram, I get this phasor. This is modulus Z or just Z. Okay, and this is phi. So इसका मैग्नीट्यूड आएगा y the root of r square plus xl minus xc square, and phi is tan inverse opposite side by adjacent side. Understood now? Yes, sir. Okay. Let's see एक एग्जांपल दिया है टेक्स्ट में. Before we proceed further with that part,
assumption. एक example I saw. Yeah. Example 7.6 we are understanding now, and then we'll go to the resonance part. Do you get it? Yes, sir. So if you are asked to find current in the circuit, करंट कैसे मिलेगा? फाइंड करना था करंट, लेकिन यहाँ पे शुरू में फाइंड कर क्या कर रहे हो? इम्पीडेंस. वाई इम्पीडेंस इज कैलकुलेटेड? ज़रूरत क्या है? व्हाट इज फार्मूला फॉर करंट इन AC circuit? Vm by Z. Vm by Z. So here you have to, if IRMS, then equal to VRMS by Z. If it is Im, then equal to Vm by Z. Here voltage given, nothing is mentioned, it means it is RMS value. Okay, so you have got voltage, here you have got impedance, take ratio, you get current. Okay, what was the second question? Hello? Calculate RMS voltage. Across resistor and capacitor. So VR equal to I into R, 0.755 ampere into 200 ohm. Why this is 200 ohm? It's already given. R value is given. Resistance value is 200 ohm given. Okay. And XC is capacitive. What is XC? Capacitor. Capacitive reactance. So capacitive reactance कैसे find करेंगे? दिया है, नहीं दिया है. That you have to find. This is nothing but 2 pi mu c. वो तो ओमेगा सी नहीं था. कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाज 1 by ओमेगा सी. फ्रीक्वेंसी वो इम्पीडेंस था. फ्रीक्वेंसी है 2 पाई म्यू 2 pi mu is omega. ओमेगा. So it is 1 by omega c, and its power is negative 2. See, power is minus 2. Do you understand? There are various ways you can write impedances. XC equal to 1 by omega c. You can also write 2 pi mu c. You can also write 2 pi mu c raised to minus 1. And if it is XC square, then here you will write minus 2. That's it. Do you get it? Okay. So we got 151 and 160.3. We so far so good. Any question? नो सर. No. नो सर. Then एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, is the algebraic sum of these voltages more than same voltage? If yes, resolve the paradox. अभी देखो algebraic sum मतलब इसका है 151 and this 260, so आंसर आएगा 311, राइट? जबकि वोल्टेज तो दिया है सिर्फ 220 वोल्ट. How it is possible that voltage across resistor and inductor capacitor together makes up a sum which is larger than the supplied voltage? What's your justification? क्योंकि वो मैक्सिमम वोल्टेज है. No, it is RMS voltage. All these voltages are RMS only. तो V नॉट बाई रूट 2 हो गया है ना. No,
This 200 volt, 220 volt is given. It is RMS voltage. Voltage across resistor is 151. These are RMS only. All these are RMS value. तो इनके दोनों का सम मिला के 220 होना चाहिए ना. हाँ तो हो तो नहीं रहा है. ये जितने मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखो 151 एंड 160.3 राइट. इन दोनों का सम करूँ तो टोटल वोल्टेज 220 होना चाहिए. इट्स नॉट हैपनिंग. ऐसा क्यों? सर वो फेज डिफरेंस होता है ना वी हाँ, कैरी ऑन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. वीसी आगे वीआर साथ में चलता है फिर वीसी आगे चलता है हाँ, मतलब करंट तो से ऐसा है 5/2 ऑफिशियल. फेज न्यूट्रल. मान लो this is your reference line, this is the phasor of current and this is phasor of voltage VR, right. अभी कैपेसिटर का फेजर का कौन सी डायरेक्शन में होगा? इट्स 90 डिग्री लेस. सो दिस इज VC. ठीक है, दोनों का एंगल कितना हुआ? -90. अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये टोटल वोल्टेज V आया. So this is 220 volt. This is around, what is voltage across resistor? You have textbook open. 151 volt. And this is आया 160.3. Now देखो. This is 151 volt. It is correct, but it is along x-axis. Voltage across capacitor is at a phase of 90 degree. They are not in the same direction में होते तो ऐड हो जाते हैं. Like because it is 90 degree, you have to use Pythagoras theorem, and so this is 220 volt. So this should be, now if you take root of 151 square plus 160.3 square, then answer आएगा 220 volt. Ordinary sum नहीं है because as Darshan was saying, voltage across resistor and capacitor are having a phase difference of 90 degree, and so ordinary sum will not give 220 volt. Using this method you can get 220 volt. Understood? यस सर. Okay. सर वापिस रिकनेक्ट होना है ना? हाँ, होना है. यहाँ पे लिखा है देखो, पढ़ लो इसको एक बार. Then we'll start resonance. रेजोनेंस इसमें ये नया टॉपिक बट pertaining to AC only. Okay, shall I proceed further? यस सर. क्या है? Okay, power in AC circuit बाद में करेंगे. रेजोनेंस का टॉपिक है. तो मैंने लिखा है, चलो. All of you know about the resonance. Am I correct? यस सर. What do you know about resonance? Whatever comes to your mind, feel free to speak. I'm not going to kill anybody. चलो बोलो. रेजोनेंस मतलब क्या है? पढ़ाया है रेजोनेंस?
लास्ट ईयर पढ़ा था। हम्म, क्या याद आ रहा है? वो अगर सेम हो तो हाँ रेजोनेटिंग हाँ, क्या सर्कल सेम हो? अच्छा, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ गजीनी उसमें क्लास, दिस होल क्लास इज गजीनी शॉर्ट टर्म मेमोरी। frequency of oscillations हाँ in particular हाँ time period. हाँ। आप सब लोग जो भी दिमाग में आता है बोलो, मैं बाद में सब जोड़ के एक स्टोरी बनाऊंगा, ठीक है? सो फील फ्री टू गिव आंसर। वो रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट याद करो, क्या करते थे और क्यों करते थे? वो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, हम्म एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और इंटरनल हम्म, फ्रीक्वेंसी, हाँ तब रेजोनेंस होता है। हाँ करेक्ट। अभी थोड़े से लाइन पे आ रहे हो आप लोग। तो एक फोर्क को ट्यूब के टॉप के ऊपर रखते थे, और जब रेजोनेंस हुआ तो एक लाउड साउंड सुनाई देगा, और आप बोलते थे कि रेजोनेंस हो रहा है। व्हाट वाज दैट? सो आई वाज हैविंग सम टाइम, सो आई थॉट ऑफ राइटिंग डाउन। आपने जो पढ़ा था वो उसको बोलते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस, एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। रेजोनेंस। वो सर क्या था? बोलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ system, natural frequency omega 0. If both becomes equal, system oscillates at large amplitude, और वो right? डिस्कस होता है। And that was called resonance. Okay. फिज लैब एक्सपेरिमेंट एक तो मैंने याद दिलाया, क्या था? रेजोनेंस एड ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट। वन मोर भी था, सिल्वर मीटर एक्सपेरिमेंट था, क्या? चांदी मीटर एक्सपेरिमेंट, नहीं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। नहीं सोनोमीटर नहीं किया था? नहीं। प्रो उसको स्ट्रक करो और फिर एक वही रेजोनेंस ट्यूब का था ना। वो सोनोमीटर वाला नहीं किया था कि यू स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फोर्क ऑन ए पैड एंड पुट इट ऑन द वुडन बॉक्स एंड द स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जंपिंग, नहीं वो नहीं किया था। पेपर राइडर फॉल होता है, नहीं किया है? नहीं ओके देन दैट एक्सपेरिमेंट इज गुड इनफ। नहीं सर, वो हमने 10th में किया था, सोलो राइडर जंप होता है वो वाला। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। No, 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 that's good. नहीं 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 नहीं, हाँ, हाँ। हेलो, क्या किया? ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा क्लास चालू है। ठीक, ठीक।
You are still the host, Shivam? Yeah, sir. You are a co-host? No, sir. नहीं है. Okay, just hold on. डिस्कनेक्ट हुआ था ना अभी. Hmm. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग का चालू है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ. Okay, let's start. This सर रिकॉर्डिंग. sharing, yeah, I started. And let me make you co-host. Yeah. So you are able to see this now? यस सर. Okay. What we are going to study, this is new for you. It is electrical resonance. Okay. The way in mechanical resonance system oscillates at large amplitude. In electrical resonance, if you make an analogy, we can say current in the circuit becomes highest. So what should happen here so that current becomes maximum? And remember, our circuit is the same common circuit, AC supply given to resistor, inductor and capacitor. This is voltage. Okay. यस सर. Let me write it here. What is opposition offered by resistor? Shall I write R ohm? यस सर. Opposition offered by inductor. Symbol is XL. What is formula? 1/ωc. Inductor. ओमेगा एल. 1/ωl. And opposition offered by capacitor equal to XC equal to 1 by omega C. Can you tell? I'll give one similarity that all these are having unit ohm. All are basically kind of opposition to the flow of current. How these two are different from this? अगर ये सेम हो Sir, जाए phase difference between. Okay, phase difference. If I frame my question, how XL inductive impedance and capacitive impedance, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना. हाँ, different from R. Both That act in opposite direction and have a phase difference of pi. So और क्या कह सकते? yeah, XL is indicating, say, XL acts along plus y axis, XC indicates it acts along negative y axis, R acts along z axis, but that is a separate story. Okay, hint. अगर ये दोनों सेम होता है तो 0 हो जाता है. ओमेगा नहीं होता. Hint is omega. Now tell. Does value of R depend upon omega? नो.
but XL and Yes. XC depends upon omega. As angular frequency will change, their opposition will change. Understand that? Yes. Yes or no? Yes, sir. Okay. So we have formula for current, maximum current equal to maximum voltage by impedance. This impedance formula, okay, XL equal to omega L and X equal to 1 by omega C. That means XL and XC both depends upon omega. Okay. It means Z depends upon omega. This implies that impedance depends upon omega, and therefore current also depends upon omega. Agreed? Yes, sir. Okay. The question is for which value of omega current becomes maximum. Equal to 0. उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी है, पिक्टोरियल स्टोरी. I'll show it to you and you tell me what does it mean. Okay. This is for a capacitor Yes, sir. and this is for an inductor. Formula already written. If omega equal to 0, 1 by 0 is infinite, it means value of Xc is very huge. Whereas inductive impedance is 0. ये Yes. discussion हम पहले भी कर चुके हैं. Now what I'm going to do, slowly increase the value of omega. Then as value of omega will increase, capacitive impedance is decreasing. Whereas Proportional है ना. inductive impedance is increasing. Why is it so? Because X is inversely proportional to omega and XL is proportional to omega. Directly proportional to omega. कोई एक मोमेंट ऐसा आएगा like दोनों से. this कि जहाँ XC कैपेसिटी इम्पीडेंस एंड इंडक्टिव इम्पीडेंस का वैल्यू सेम हो गया है. So that we can at one particular frequency, let's say it is omega 0, उसको स्पेशल नाम दे दिया omega 0, for which XC equal to XL. इसका मतलब subtraction is 0. That means impedance is just hold on. जय स्वामीनारायण. हाँ जी, हाँ जी. ના આજે અમારે સ્કૂલ આવતીકાલે જવાનું છે. હા 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 હા. જય સ્વામીનારાયણ. Okay. So if Z becomes minimum R, because the second argument is reduced to 0, that means XC is current equal becomes maximum. और कितना होगा Vm by R ही. That means resonance is taking place. Right? We'll come to this formula later on. उस मोमेंट पर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वी ऑलरेडी नो कि रेजोनेंस तब माना जाएगा जब कैपेसिटर का इम्पीडेंस इक्वल टू इंडक्टर्स इम्पीडेंस. So I'm writing special symbol for regular frequency. It's a special frequency. So omega 0, omega 0. So omega 0 square equal to LC, omega 0 equal to 1 by root LC.
this is the formula to find at which frequency resonance will occur. Are you getting it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you tell that अपना सर्किट तो ऐसा था, there was a resistor, inductor and capacitor. This was voltage V equal to Vm sin omega t. तो करंट का वैल्यू क्या लिखा at the time of resonance? Vm by R by R. at resonance only. Okay, तो XL और XC का क्या हुआ? XL और XC. 0. C is उसका equal to net effect हुआ Zero. Zero. 0. So they are, you can say, physically present. mentally absent. But mentally not present. Electrically absent. सर ये तो हम ही है नहीं? It's quite matching. ये इसको ऐसा है कि इंडक्टर कैपेसिटर को रिमूव कर देते तो भी उतना ही करंट फ्लो होता जितना इन द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, अब इसके बाद वाला टॉपिक है रेजोनेंस का यूज़ क्या है. ये पढ़ तो लिया, तो रेजोनेंस का यूज़ होता है, विद दैट विल कंक्लूड द मीटिंग, कि व्हेन यू ट्यून योर रेडियो, तो योर एंटेना जो होता है उसमें तो बहुत सारे वेव्स आते हैं ना. उसमें 99.9 मेगाहर्ट्ज़ वाला भी होता है, 91 मेगाहर्ट्ज़ का भी एक स्टेशन होता है, एंड 101 मेगाहर्ट्ज़ वाला भी होता है. हाउ यू आर एबल टू लिसन टू वन स्टेशन ओनली? तो आपको एक रेडियो को ट्यून करते हो, इट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. फिजिक्स में ऐसा बोले कि यू सिलेक्टेड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे, ऑर्डिनरी बोलेंगे कि हमने स्टेशन को सिलेक्ट किया है, स्टेशन को ट्यून किया. आप स्टेशन को ट्यून नहीं करते हो, आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे होते हो. तो इनमें से मान लो कि आपको ये स्टेशन सुनना है, तो रेडियो में एक नॉब होता है, आप घुमाते हो हाँ. till one particular station is heard. So exactly what is happening there, कि only this station is going and you are able to listen that only. तो ये दो का क्या हुआ, वो कहाँ गई? एंटेना पर तो सभी n number of frequencies are reaching, but you are listening to only one station. And how does it happens? filter हो गई In the सर. next episode we'll discuss. Okay, any question, any doubt? No